हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार काफ़ी टाइम लग गया मेरे को ये फाइनल चैप्टर लाने के लिए। यार थोड़ा बहुत बिजी था तो इसी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया। तो फिलहाल ये अपना हॉरिजॉन्टल ज़ीरो का फाइनल चैप्टर है। और हम लोग कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ये साइलेंट ने हम लोग को भेजा था यहाँ पे वो करप्टेड चिप लानी है जिससे हम लोगों को हेडीज को मतलब ऑफ करना है, डिलीट करना है एक तरीके से। You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. तो भाई यहाँ पे ना हेडीज ने जो साइलेंट है वो उसका बेसिक तरीके से उसने पूरा बना रखा है। और यहाँ पे मतलब पूरी चीज़ें चढ़ने के लिए सब उसी ने बनाई है क्योंकि वो यहीं पे रहता है। तो अलाइव से वही बोल रहे कि तुम मेरे लिए ये चढ़ने की मतलब चीज़ें बना सकते हो पर इन मशीनों को यहाँ से नहीं हटा सकते। तो साइलेंट बोल रहा है कि मशीनों पर नहीं चढ़ सकते। Exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. तो ये रहा साइलेंस। For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entering. तो भाई ना अपना जो साइलेंट निकला बड़ा चालू निकला। You are clear इसने to कुछ proceed. चीज़ें बेसिक हमको बताई, वो मैं आपको बात को Mind बताऊंगा। your footing. फिलहाल तो हम चलते हैं, जो लेने आए वो लेते हैं। ऊपर जाना है कि नीचे? आई थिंक नीचे ही जाना है। और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ यार, ये लास्ट चैप्टर है इसका। यार ये गेम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है और मैं इसको पूरा अभी तक खेल भी नहीं पाया हूँ और इसकी एंडिंग होने वाली क्योंकि मैंने साइड मिशन इतने नहीं किए हैं, हालांकि मेरे को कर लेने चाहिए थे।
पर कोई नहीं यार, इसका जो सेकंड चैप्टर खेलेंगे उसमें करेंगे, उसको थोड़ा बढ़िया से खेलेंगे। आप किधर चलना है यार? साइलेंट, तूने रास्ते बनाए थे थोड़े ढंग से बना लिए होते। It's, held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. भाई साहब, तो लाइव से पूछ रही ये ब्रिज कहीं गिरेगा तो नहीं, तो साइलेंट कुछ कहने वाला था तो अल्लाह ने बोल दिया कि रहने दे, तू पनौती है भाई, तू कुछ काली जबान वाला बोल देगा। बात भी सही है यार। Glad that's over. आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं जो डिवाइस हम लोग को लेनी है। अब आगे से कहाँ जाना है? ओके, इधर जाना है अपने को। Must have been where they lived. What's left of it? काफी यार लंबा रास्ता नहीं कर दिया। All enclosed by rock and metal. तो भाई इस वाले सीन में ना अपने को बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, तो बस तुम लोग देखते जाओ। Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a ओके, chance तो to ये unpack. एलिजाबेथ का These रूम are her है। journals. क्या है यहाँ Elizabeth's पर? journals. And they're all destroyed? scan them. The focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. तो भाई एलिजाबेथ का रूम मिला था और वहाँ पे कुछ फाइल साइल्स थी, तो अलाय बोले थे इनको स्कैन कर लें, तो साइलेंट ने बोला कि इनको स्कैन करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, साल या 2 साल। फिलहाल जो काम कर रही हो उस पर ध्यान दो, और वो हम लोगों ने वो काम कर लिया तो हम लोग इसको बात को रिकवर कर लें। तो बात तो सही है। तो फिलहाल यार यहाँ पे कुछ है, चलो देखते हैं। This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen, the swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out, that's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me, I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take
gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. तो भाई यहाँ पे ना सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो इन लोग का डोर था वो मतलब एक तरह से ख़राब हो चुका था, तो उसको किसी को बंद करना था। तो ये तो चमन चुतिया गए नहीं, तो एलिजाबेथ ही गई बाहर। इससे बात करते हैं, पहले रुको। Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यार। हाँ, तो यहाँ पे कुछ हो क्या सीन हुआ था कि यहाँ पे इन लोग का जो गेट था वो मतलब क्लोज नहीं हो रहा था, उसको मैनुअली जाके बाहर से बंद करना था। तो ये लोग नहीं गए, तो एलिजाबेथ बाहर जाकर उसने मतलब मैनुअली बंद किया और वहीं पे जाके मतलब डेड हो गई आई थिंक। और साइलेंट भी इसको यही समझा रहा था, बहुत सारी चीज़ें मतलब तारीफ इसकी कर रहा था। तो फिलहाल ये जो मैं लेने आया था वो नहीं मेरे को भी मिला है। वो कहाँ है? भाई ऊपर नीचे साले यही करवा लो। चलो खैर देखते हैं। There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. तो भाई अपने को कंट्रोल रूम ढूंढना होगा। मैं कितनी देर से साला चले जा रहा हूँ, कहाँ है इनका कंट्रोल रूम? इस चिड़िया के घोंसले में बना दिया कंट्रोल रूम भाई। आई थिंक हम लोग पहुंच गए डोर तक। When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Unlocked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about
is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Flooding atmosphere. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. The Master Override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. तो भाई ना यार यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुआ। ये डेथ फैरो करके नहीं, जो टेबल के बीच में ये गोल गोल घूम रहा था ना भाई, सारी की सारी फसाद की जड़ साला यही निकला है। इसने पहले मशीनें बनाई जो मतलब ये इंसानों की चीज़ें खा के फ्यूल बनाए, फिर जब वो करप्टेड हो गई तो उनको बचाने के लिए एक नया मतलब अपना इन्वेस्ट बनाया, और फिर उसके बाद जितने भी ये मेज़ पे बैठे थे इन लोगों को इसने इसलिए मार दिया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये ज्ञान का श्राप ना मिले। पर अलाइ उस पर काफ़ी नाराज़ थी, तो अलाइ ने भी बोला कि जब मैंने गेट खोला तो उनकी आत्माएं उसी दुनिया में चली गई, और एक्सेट्रा साइलेंट ने भी उसको बहुत कुछ समझाया है। तो आई थिंक ये डिवाइस जो अपने को मिली है ना, इसी से हम हेडीज को डिलीट करेंगे और उनके राजा को हमें बताना होगा कि वॉर होने वाली है, जो हालांकि होने वाली है, बताएं ना बताएं फिर भी। क्योंकि अवार्ड से तो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What?
It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. तो भाई यार, जैसा मैं कह रहा था यार, बहुत खुलासा होने वाला है। तो देख रहे हो साइलेंट ने क्या कहा। तो भाई ये हेडीज के साथ काम करता था, और एप्लिक्स क्लिप्स वाले जो बंदे थे, ये इसी ने पूरी की पूरी क्लीन बनाई थी। और इसने ये बताया कि ये जब मैंने काम किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए ये सब काम किया था, और मुझे नहीं पता था कि मतलब हेडीज की मतलब कि वो दुनिया मिटा देगा। जब मुझे ये पता चला तो मैं इसके खिलाफ हो गया,
और मैंने तुम्हारा साथ दिया। तो देख रहे हो भाई साइलेंट बंदा कितना मतलब डेंजर है, काफ़ी चीज़ें हैं। और क्योंकि यहीं पे रह रहा था तो इसकी ये लैब थी, और हमने जो टूल मिला था उसको हमने ज्वाइन कर लिया है अपने हथियार में, और उसी की साइलेंट की लैब से। तो फ़िलहाल हमें चलना है किंगडम वापस, और आई थिंक राजा से बात करनी होगी। करते हैं राजा से बात और देखते हैं क्या बताते हैं वो, कि कितनी देर में वॉर और चालू होने वाली है। कहाँ गया राजा, कहाँ गया भाई? ये रहा, मिलता हूँ इससे। Aloy, what brings you to Meridian? A threat. The Eclipse will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the City Guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. तो भाई अवार्ड को मैंने बता दिया है। अब हमको चल के मराठ से बात करनी है और उससे कुछ पूछना है चल के कि कैसा क्या आगे का जंग की तैयारी रहेगी। तो ये रहा, और ये अपने कुछ सोल्जर से बात कर रहा है, तो यही बता रहा होगा कि ध्यान रखो हमला होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो उससे बात करते हैं। Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the City Guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the Spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. तो भाई अपना बता रहा था कि हमने पूरी मतलब किले में बोल दिया है कि तैयारी करो। तो फिलहाल अभी बोला है कि लाए तुम जाओ और आराम कर लो जाके। तो अपने को चलना है, लोकेशन मिल गई है। थोड़ा बहुत मैंने बीच का पार्ट काट दिया है, इतना भागा दौड़ी कर रहता है, क्या ही रखेंगे यार। और भाई मैं यही कहूँगा ये जितना भी अपना शेना वेना लगा लेना, वो हेडीज आएगा ना तो सबका तेल निकाल देगा वो। Olin's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished?
तो हम लोग को आराम करना है क्योंकि जंग आने वाली है, काफ़ी टाइम से आराम नहीं किया है, तब तक कर लेती है लोग आराम। How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you rust after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. And what is it? The end. Or how it begins, anyway. Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. तो भाई जिसको ढूंढा गली गली वो खुद चल के आ गया, तो रिलीज यहाँ पे भी आ गया बैंगलोर में। बाद इसका निकालते हैं हम लोग यहाँ तेल, क्योंकि ये है फाइनल फाइट और इसको इतना पेलेंगे साले को ये भूल जाएगा इसने पंगा किससे लिया है। भूल जाएगा तो क्या ही मैं बोल रहा हूँ। पहले तो इसको पेलते हैं ढंग से। देख लो भाई ये सारे मिलके मार रहे हैं अकेले। आई थिंक मैंने भी इतना टाइम से बहुत वेपन्स और पावर आवर है मेरे पास, देख लूँगा इनको। और अपने पास ये ब्लेड भी है, ये भी काफी पावरफुल हो चुकी है। Meridian must run red to be cleansed. भाई यार साले तेरा ही मैं वेट कर रहा था, आजा। अरे भाई जल गया भाई, ये मरा।
अब तो ये गया, देखो बस मेरा कमाल देखो भाई, पावरफुल एरोज हैं, ऐसे थोड़ी। This was not meant to be. तो भाई इससे बोलूँगा ज़्यादा बकैती ना करो, इसको सीधे पे लो क्योंकि इसने बहुत तंग किया और इसके फादर को यार इसने मारा था स्टार्टिंग में। निकल भाई ना, मैं ना इसको ना बख्श रहा, बहुत हो गया आराम से बात करने का। तो फिलहाल ये टूटने की गंदी आदत पड़ी है ना, चलो इसमें देख लेते हैं कुछ मिल जाए। अब ये लूट के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गेम तो एंड ही होने वाला है। पर खैर कोई नहीं, पहले तो चलो जो इनकी सेना आई उससे लड़ते हैं और चल के उनका भत्ता बनाते हैं यार। Nutritious. Where do you need me? तो भाई डेथ ब्रेकर आ रहा है राइट साइड से, और भाई कितनी मिसाइलें छोड़ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये गन अनलिमिटेड होनी चाहिए, अगर अनलिमिटेड नहीं हुई ना तो भाई लग जाएंगे मेरे एल। यार अनलिमिटेड तो है पर रीलोडिंग में बहुत टाइम ले रही है। साइड से भी इनको रोकना पड़ेगा। भाई दोनों साइड से आ रहे हैं भाई, इनसे पहले ना ये आगे वालों को मेरे को मारना पड़ेगा, ये जो आ रहे हैं क्योंकि ये आगे आ जाएंगे जल्दी, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। पीछे देख रहे कि मिसाइलें छोड़ रहा है। रुक जा भाई, सबको मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा। हाँ मैं देख रहा हूँ उसको। अरे भाई इसने मेरे को देख लिया, तो मेरा रुक गया। It's taking a shot at me. ओ तेरी भाई, मैं बहुत थोड़ा सा बचा हूँ, बस थोड़ा ही रह गया। आओ भाई आओ, तुम भी आओ। ओके आई थिंक एक वेव तो ख़त्म हो गई है, वेट करना पड़ेगा, और भी बंदे आते होंगे। और आई थिंक इस बार वो दुगनी ताकत से आएंगे। ये कौन है? तो भाई ये नीचे कैसे आ गया? अरे ये तो मेरे बंदा था, बच गया। Raise arms again, west. भाई दूसरी वेव आ गई, मैंने बोला था आ गई। चलो इन्हें भी देखते हैं। Drop it and move. आओ सर्वर को छोड़े मुझे। अरे भाई तुम लोग तो बुरा मान गए यार। ओ तेरी भाई ये आ गया।
भाई यार काफी तादाद में आ रहे हैं ये लोग यार। बस मेरे को गोलियां भरते रहना, उनको मारते रहना। अरे भाई साहब, रुक लो भाई रुक लो। अबे भाई ये बड़ा वाला आ गया यार। भाई ये ना बिजली के शॉट मारता है, काफी खतरनाक शॉट लगते हैं तेरी। देख रहे हो भाई। अरे तेरी भाई 2 मिनट रुक जाओ सालो, तुमको बताता हूँ। बस गन उठाने दो मेरे को। आओ अब आओ। Gotta get to another platform. भाई साहब इतनी दूर से भाई मार रहा है ये। गन वॉल्स लोड करने में काफ़ी टाइम लगा लेती है। बस आई थिंक सब डेड हो गए। Aloy! 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 Tab? My all-mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they? No, wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. तो भाई साहब अब जो डेथ ब्रेकर करने आया था उसने कर दिया और पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। देख रहे हो किस तरह से पूरी सिटी को जला के रख दिया है भाई। इससे पहले और डेथ ब्रेकर ऐसे जागे चल के हेडीज की बैंड बजाते हैं। और उसके एक एक पंख उखाड़ डालते हैं साले के। अरे भाई हट जाओ इस टाइम तुम। भाई साहब अटैक करता है मेरे को, सरप्राइज अटैक करता है साले। Not enough fight in this one. तुम यहाँ देखो, मैं आगे देखता हूँ। भाई हल्के में ले रहे हैं ये लोग। भाई नदी क्रॉस करके चलना पड़ेगा। भाई स्विमिंग तो आती है अपने को। हालांकि मुझे इस लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, भी मैं लूट रहा हूँ। पता नहीं क्यों लूट रहा हूँ यार। अब आदत सी बन गई है। 1 मिनट रुको यार, मेरे साथियों को मार रहा है तो उनकी मदद कर देता हूँ।
तो भाई एरोज सारे कंप्लीटेड कर लिए हैं और अच्छा खासा स्टॉक है मेरे पास, पर फिर भी इनको ले लेते हैं, आदत से मजबूर है। चलो चलो पहले फटाक से चलते हैं, हेडीज की पखने काटते हैं चल के। It's begun. Hades is transmitting. तो ओके भाई यार, हम लोग लेट हो गए हैं और हेडीज ने सारी मशीनों को एक्टिवेट कर दिया है, तो फटाक से चलना होगा अपने को। वैसे भी काफ़ी देर कर दी है। जगह जगह पे देख रहे हो पहाड़ टूटे टाटे हैं, उदार है, पनार है भाई, ये नहीं कि जल्दी पहुंचाते हैं। Keep pushing. Knew this wouldn't be easy. Okay. So no holding back. टेंशन नहीं लेना लो, अपने पास बहुत टाइम है। ओके तो हम लोग पहुंच गए हैं। It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Last chance. तो भाई साहब एरॉन्ड और अपने ये बाकी के जितने दोस्त थे जो हम लोगों ने बनाए, ये सब आए अपने साथ फाइट करने। तो चलो चल के हेडीज को पेलते हैं, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी फाइट होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। चलो देखते हैं क्या है भाई। Has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. भाई मैं क्या बोल रहा था, मतलब आसान फाइट नहीं होगी भाई। डेथ मेकर देखो तो कहीं वेट कर रहा था भाई। आई थिंक इसको मारने में अपनी हालत ख़राब होने वाली है। कोई नहीं, जब तक ये मेरे दोस्तों को मार रहा है तब तक तो ठीक है। जैसे ये मेरी तक घूम रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोई नहीं, करते इसका
भाई भाई एक बुलेट में मेरी कितनी हेल्थ चली गई। 3-4 लग गए तो क्या होगा यार। इसको डैमेज भी देते रहना मैंने। खड़ा नहीं होने दे रहा है। Taking more than you to stop me. अच्छा मेरे बाकी भी शांति से फाइट कर रहे हैं। मेरे को बच के रहना है यार। मैं ही मर गया ना क्या फायदा। I'm gonna tie one down. भाई साहब यार ये वाला वेपन इसका काम नहीं कर रहा है। Don't let them overrun us. मैं क्या सोच रहा था ना इसको एक जगह लॉक कर देता हूँ पर आज की मोटी चर्बी का है तो इसको एक जगह में लॉक नहीं कर सकता और इसकी डैमेज भी काफ़ी है तो मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ इन एरो से ही मारना पड़ेगा। कोई असर नहीं करता। चलो इसको कुछ ठंडा खिलाते हैं। थोड़ा बहुत तो इसको देवी असर हो रहा है इसका। भाई इसको मैंने काफी तो डैमेज दे ही दिया है। Execute. Aloy, beware the Deathbringer. I can't back down now. भाई कर क्या रहा हूँ इसी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ पर मारने का दे रहा भाई। 2 मिनट खड़ा नहीं होने दे रहा है। पहले तो इसकी वीकनेस यार हट जाती है बार बार। एक जगह रुक जा भाई। मारा देख लो भाई इसकी हेल्थ अभी तक कितनी है यार। यानी अभी तक अपना जो सामना इनसे हुआ ही नहीं ढंग से। भाई हेल्थ आ गया मेरी। इसको ना आई थिंक कुछ और करना पड़ेगा। इसका ऐसे काम नहीं चल रहा है। ऐसे जो है मेरे एरोज खत्म हो जाएंगे साहब। और Time enough to beat the machines back. बस लिटिल भी मारता हूँ थोड़ा टाइम मिलेगा मेरे को। They keep coming. Knock them back. Take them out first. भाई थोड़ा ही बचा है बस थोड़ा बचा है। अब ना इसको आराम से फेस कर लेंगे। हाँ ये गलत किया इसने यार। तो भाई अपना बैकअप मंगा लिया। अब मैं नहीं बचूंगा लगता है। भाई साहब एक तरफ से आओ यार। Prioritize entity. Okay. यार ये डेथ पूरा ही बचा है बस मरने वाला है साला। अरे यार कुत्ते अबे यार एमो खत्म। इन वक्त में यार इस टाइम में खत्म होने चाहिए थे यार। एमो बनाने पड़ेंगे। शेट यार जला दिया इसने। अब ना इसको जलाते हैं बहुत टाइम हो गया। उससे पहले ना इसको भेजते हैं बेटी को। ये ज़्यादा कूद रहा है।
जा कुत्ते। भाई कितना मारा, मरने का नाम ही नहीं ले रहा सुअर कहीं का। भाई दे मिसाइलें भाई, नीचे ऊपर सब दाग दी साले ने मिसाइल। My way's clear. Deathbringer fall. System threat imminent. I'm more than a threat. फाइनली यार हमने सब मार दिया। टाइमर शुरू होने से पहले इसको मार दिया है। कुछ टाइम नहीं अपने पास है, इसको भी खत्म करते हैं। Last one down, for now. We've cleaned them out. पहले थोड़ा और रिसोर्सेज ले लेते हैं यार, चल के इसको ऑफ करते हैं पहले। Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth,
Being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. तो भाई फाइनली हमारा जो चैप्टर है हॉराइजन ज़ीरो का वो ख़त्म हुआ। अच्छा, मेरे को लग रहा था कि लास्ट में आई थिंक मेरे को हेडीज से भी फाइट आइट करनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। पर ये जो लास्ट का सीन जो देखा है साइलेंट का कि यार इसने इसको अपने मतलब उसमें कैद कर लिया। और इसने इसको क्यों कैद किया क्योंकि जो हेडीज जो गाया के साथ जो कनेक्टेड था उसको किसी ने सिग्नल भेजा था, इसी की वजह से हेडीज अलग हुआ था। तो ये सब साइलेंस मतलब जानना चाहता है। और लास्ट में जो आपने देखा जैसे कितनी बड़ी मशीन है, और आई थिंक ये इन सबको एक्टिवेट करना सीखना चाह रहा होगा, क्योंकि यार ये ज्ञान का तो भूखा ही है। और एलाई को उसकी जो एलिजाबेथ है उसकी बॉडी मिल गई, और उससे कुछ उसको मतलब मिला है, और हमने पूरे इसको बचा लिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो गई हैप्पी एंडिंग। अब करेंगे हम इसको एंड और मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट गेम में। और इस वीडियो को डालने में ऑलरेडी 3 दिन लेट हूँ, तो उसके लिए यार सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि अच्छे से वीडियो लाता रहूँ। तो देखते हैं कौन सा गेम खेलें। तो अगर आप हो सके तो कमेंट में मेरे को बताना आपको कौन सा गेम देखना है, तो मैं उसी गेम की वीडियोज़ बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।